Then explanatory. Explanatory this type of study seeks to explain certain phenomena and is useful when conducting studies in a complex studies or organization. Descriptive case study requires the investigator to present a descriptive theory which establishes the overall investigator to follow throughout the study. Then case study method examines the particular case in a very detailed manner. Then PRA technique. Gote participatory, every organization adhere to a particular participatory paradigm. And PRA, RRA and PRA, it has RRA hochi rapid rural appraisal, जोटा कि एवं PRA होची participatory rural appraisal. Eta madhya dita model to closely related family approach. And they emphasize a reorientation in the relationship between outsider and the subject. PRA describes a growing family of approaches and methods to enable a local people to share, enhance, and analyze their knowledge of a particular issue. PRA technique have proved to be much more used in diagnosing specific problem. PRA technique use करी गोटे specific problem को diagnosis करिया पई हमें व्यवहार करता. PRA follow different techniques and tools, the review of secondary sources, direct observation, key indicators, ranking and scoring, diagramming, triangulation, then case studies and stories, semi-structured interview, construction and analysis of maps, models, एगुड़ा सब वेबसाइट को व्यवहार करें. Then reliability, validity, and triangulation. Another is that reliability, validity, and triangulation. Reliability and validity is very important in social research. Unless data are reliable, then you can draw valid data. ये जो reliability, validity, and triangulation, these concerned with the evaluative aspect of social research, that is evaluating qualitative research. To evaluate the extent to which the data gathered and analyzed represent the ground reality. So extent data that is important in realizing. Then reliability. गोटे क्वालिटेटिव रिसर्च रो लक्ष्य होची टू ब्रिंग लाइट द फैक्ट ऑफ ए फेनोमेना. कौन सी गोटे फेनोमेना फैक्ट को लाइट को आनिबा होची क्वालिटेटिव रिसर्च रो गोटे मेन ऑब्जेक्टिव. तेनो सेति पई रिलायबल डाटा इज नेसेसरी. सो रिलायबिलिटी मीन्स the extent to which the measurement procedure yields the same answer and however and wherever it is carried out. जोटी भी हो जदि सेम आंसर देला ताले ताको हमें रिलायबल बोली कहिबा है कि नहीं. Then validity refers to the extent to which it gives the correct answer. The correct answer जदि मिलला ताले ताको valuable कहि. Then reliability is about to consistency, and a person or thing would be reliable if when repeated use the same method it produces the same result. यदि बारंबार मेथड चेंज करी गोटे से तरह कलेक्शन करा जाए ताले से सेम रिजल्ट देला
ताहले आमे ताकू रिलायबल डाटा बोली कहि परिबा। तेणु रिलायबिलिटी तीन प्रकार है पारे। गोटे होची क्विस्कोटिक रिलायबिलिटी, diachronic reliability, and a synchronic reliability. There are three types of reliability. So quiscotic reliability refers to a condition in which a single method of observation yields the same measurement over and over again. गोटे सिंगल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ता जेते से अगेन अगेन बारंबार जेते करो से सेम रिजल्ट सेडो को हमें क्विस्कोटिक रिलायबिलिटी बोली कहबा। क्विस्कोटिक reliability. Then diachronic reliability, it refers to stability of an observation over time. जेते तारा समय भितर जेते ऑब्जर्वेशन करो सेटा गोटे स्टेबल रिजल्ट रहउथबो। Then synchronic reliability कहले it refers to the similarity of observation within the same time period. गोटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड भितर सेम प्रकार ऑब्जर्वेशन करथबो एवं जाकी इवैल्यूएटेड बाय द कंपैरिजन द सेम डाटा. It involves observation which is consistent in nature. How can you work towards reliability, attending reliability? केमती reliability attend करिवो? So reliability of a data for interview or case observation can be increased by training the interviewers. Interviewer को अधिक ट्रेनिंग देवा द्वारा तुम्हें तार reliability बढ़ी पारिबो. He can collect reliable data. है ना? So it is a special training is required for the researcher or the investigator, those who supposed to collect data. यदि ताकू विभिन्न ट्रेनिंग माध्यम रे हमें increase करि परिबा reliability. Then validity is कहली procedural validity. So validity refers to the accuracy of the data generated by the research instrument, whether it is an interview or questionnaire or some other means of research, whatever means the research. किंतु जदि validity इटा रेफर करे कोन the accuracy of the data collected through different methods. The different methods द्वारा collect होतिबा डाटा को जदि हमें validity रहला ताहले हम ताको प्रेशर validity. Qualitative research रे more likely to valid than quantitative research. Quantitative research तुलना रे qualitative research validity मात्रा अधिका percentage अधिका देखिबो देता है. तेनो procedural validity केमती अटेंड करिवो? There are some guidelines, some points to be remembered in order to attain procedural validity. You must refrain from talking unnecessary things when you are in field. And you have to listen much, talk less. By this, you can attain also procedural validity. Then produce field note. Field note, मतलब बड़े-बड़े नहीं हो. कौन सब बड़े कि you can depend on human memory. Memory ऊपर है, हमारा स्मृति ऊपर हमें depend करी परिबा नहीं. So that we have to take note of a field note हमें करी दिया. And begin to write yearly. Field रू आसिला परे हमें संगे संगे लिखि दाउ पड़ियो. केना हमें सब जिंस मन रे करि पारे कोटा भूल जाई परिबा. So we have to write yearly. रिपोर्ट ता जा दरकार था ताको write करियो. एवं जोते बळे रिपोर्ट लिखिबा सेटा को जते कंप्लीट करिबा एवं से रिपोर्ट ता पूरा कैंडिड हेतिबा दरकार. जोरा संपूर्ण कैंडिड ओपन बा क्लियर हेतिबा दरकार. एवं हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग इधर करिबा our presentation in the report should be very accurate and clear, not only in writing but also in expressing meaning. उभय रे क्लियर हवा दरकार. These are the besides field research रे you can check a validity check in the field research. Field research समय रे तमे सेठी मध्ये validity research माने research validity check कर परिबो. How far the data are collected जो field रे how far it is valid. तक मध्ये check कर परिबो. Then
So triangulation is a multiple method for assessing the validity of your research data, may be more specifically called between method or cross method triangulation. You are able to combine different methods and obtain a better picture of the subject of your research. Under this triangulation, you are able to combine different methods and obtain a better picture of the subject of your research. This is a very better picture. And the very objective of triangulation is to obtain accuracy in measurement between 2 points for which they require a way of measuring that is reliable. Then it would obtain accuracy in measurement. Measurement than accuracy you have to attain accuracy. So there are two types of triangulation. One is the methodological triangulation and the theoretical triangulation. Methodological triangulation means the way we use different methods in the research process. जो way रे हमें research पे विभिन्न method यूज होता है इसलिए हम methodological triangulation बोली कहूँ. Theoretical triangulation कहले it refers to the use of various theoretical perspective in our research. हम research रे जो various प्रकार यूज करिबा theoretical perspective को हमें methodological theoretical triangulation बोली कहि पारु. This theoretical triangulation sociologist मानक भितर बेसी पॉपुलर है. It is of course possible to study a social group from theoretical perspective of a structuralist or an interactionist. That is about methodological and theoretical triangulation. Then we may discuss about formatting, qualitative data formatting and processing. Data को केमती formatting करिवो और केमती processing करिवो. How to format and data processing and analysis. Analysis which is a very important term in social research. Analysis is a very important term in social research. Here the qualitative analysis require dialectic between ideas and qualitative data. So if we qualitative analysis then it require an analysis dialectic between ideas and a qualitative data. Data ta qualitative हिथिबो एवं data को analysis करे पे one have a farsightedness but idea ताले सेटा better analysis रे साहाय्य करिवो. Data analysis is very important and analysis रे ऊपरे आरो निर्भर करे कोन the validity of the or reliability of the result. तेणु ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस रे विभिन्न स्टेप दे हमको जिबाक पड़िबो. तो केमती ना डिस्क्रिप्शन इज इंपोर्टेंट. क्वालिटेटिव एनालिसिस रो फर्स्ट स्टेप होची टू डेवलप ए कंप्रेहेंसिव डिस्क्रिप्शन. जो डाटा है तो को डिस्क्राइब कोडे राइटली करिबा है ना, दैट इज इंपोर्टेंट. इफ राइटली डिस्क्राइब देन इट कैन एनालाइज बेटर, हेल्प इन बेटर एनालिसिस. एवं ए जो डिस्क्रिप्शन कला बेले हम तीनटा जिंस को दृष्टि रखिया पड़िबो. गोटे होची कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन, जो सिचुएशन रे एटा डाटा कलेक्शन हेची से कॉन्टेक्स्ट ता, एवं गोटे इंटेंशन, the intent subjective meaning issued by the actor. जो actor बा जे respondent जो data देची तार intention कौन, but keeping what is intent while explaining this, what intention does he possesses, that is important. That will help in analysis of the or describe the data, analysis of the data. Then the process, it means it focus on the process. We shift our attention from content process. माने जो कॉन्टेक्स्ट रे द ग्रोइंग डिसेंटमेंट इफेक्टिवनेस ऑफ द सेटा करा गला सेटा को गोटे कॉन्सिक्वेंसेस गोटे प्रोसेस को प्रोसेस रे
आमे ताकू डिस्क्राइब करबा इट लिंक टू दैट ऑफ चेंज प्रोसेस कहले गोटे चेंज को आमे ये करथिबो आई डोंट our attention da from context and intention to the consequence of the action एवं सेटा कहबा द तार रिजल्ट कोन सेटा विषय रे चिंता करबाटा को आमे प्रोसेस बोली कहू consequences where the disintegration ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ତାର consequence କଣ ହବ ତାକୁ refer କରିବାକୁ ହବ ତେଣୁ process context or intention these three are vital in describing then come the classification classification means sorting out of mass data into various categories or classes basing on different characteristics विभिन्न लक्षण भितरे आमे जो मास डाटा कलेक्शन करथिबा ताकू कैटेगराइज करबा को आमे क्लासिफिकेशन बोली कहू क्लासिफिकेशन मींस कैटेगराइजिंग डाटा ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विभिन्न बेसिस रे ताकू आमे कैटेगराइज करिया को क्लासिफिकेशन दैट आल्सो हेल्प इन एनालिसिस क्लासिफिकेशन कले तापरे आमे करबो तापरे वी कैन आल्सो इट विल हेल्प ऑन कोडिंग थ्योरेटिकल कोडिंग कोडिंग द ओपन कोडिंग selective coding in the coding kari and the coding also help in the description of the or analysis this is very simple so this is about then writing of qualitative data then writing report tapare kemti qualitative report kemti ame lekhiba how to write qualitative writing of qualitative data that means writing of qualitative research of a seminar or research method it can be gathered from the most books in research methods how to write a data qualitative data ro write up kemti karibo ago you have to understand or grasp the data grasping is important तमे आगे बुझिले then you can write down writing of the process is the process whereby the world is transformed into words आमे लिखिबा माने कोन लिखिबा कहले राइटिंग ऑफ कहले आमे जहां में ऑब्जर्व कले ताकू गोटे ट्रांसफॉर्म करिमा गोटे केतेटा शब्द रे तेनु क्लासिक clarification is required about the meaning of the word कहना हमें जो word use करिबा writing the report लिखला बेलको ताकू हमें word रो meaning का clear हमें थिबा दरकार so that will help us in writing आ गोटे जिंस होजी after collection of data or analysis classification writing yearly you have to write yearly खूब शीघ्र हमको लिखिया को पड़िबो नहले we can rely on human memory कारण जेतु हमें डाटा कलेक्शन बड़े मेमोरी ऊपर डिपेंड करूचे इंटरप्रिटेशन कौन के कहला तार प्रकृत अर्थ कौन ए सब को डिपेंड करबो याली राइटिंग एवं अनदर इंपोर्टेंट राइटिंग रे ना राइटिंग स्टाइल केमती रिपोर्ट राइटिंग लिखिबो तार ओटे स्टाइल अछि यू हैव टू राइटिंग स्टाइल जे तमर बेटर तेनो फील्ड वर्क रे एथनोग्राफिक अकाउंट लिखिबार गोटे यू हैव टू डेवलप ए सर्टेन स्टाइल तेणु सी जो स्टाइल टा यू हैव टू वेल नोन यदि तुम्हारा राइटिंग तुम यू आर एडमायरर ऑफ राइटिंग विभिन्न जिनस पढुछ एवं राइटर तेणु तुम राइटिंग शैलीटा बेटर हो केना इट रिक्वायर्स ए बेटर स्टाइल सो दैट राइटिंग विल बी बेटर एलिवेट बेटर मीनिंग से एक्सप्रेस कर परिबो सेति पई तेणु लिखिया पूर्व यू मेक ए ड्राफ्ट ऑफ योर राइटिंग प्रथम ड्राफ्ट करी लेख केमती इटा प्रेजेंट करूची देन ओनली यू कैन राइट so this is about this in nutshell so any doubts or questions anything
सर मोर टिके ट्रायंगल टा बुझिबार अछि। Triangle means that is triangulation. Triangulation, that is not triangle. ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଟା ଗୋଟେ triangulation, ଏଟା ଗୋଟେ method. Triangulation is a method of studying, collecting data. ଏଟା ଗୋଟେ method, ନା? ଏଟା ହଉଛି multiple method of assessing the validity of research. Validity of research को research data ଏବଂ ତାକୁ ଇଏ କରିବାଟାକୁ ଆମେ triangulation ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ triangulation combine different methods and obtain a better picture of the subject. To get a better picture of the subject, different method को combine କରିକି ଅध्यୟନ କରେ, ହେଲା? ଏବଂ triangulation ର aim ହଉଛି ବା objective ହଉଛି to obtain accuracy in measurement. Accurate measurement କରିବାକୁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ତାର ଫଳ। ତେଣୁ it is a method, ହେଲା? सर ट्रायंगुलेशन रे तीनटा मेजरमेंट निया होची ना कोन? हाँ, सेटाକୁ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର triangulation ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି methodological triangulation, ଗୋଟେ ହଉଛି theoretical triangulation, ହେଲା? ଦିଟା Yes. ପ୍ରକାର ଅଛି। Methodological triangulation କହିଲେ କଣ? The way we use different method in research process. Research process ରେ ଆମେ ଯୋଉ different method use କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ଆମେ methodological triangulation ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା? କିନ୍ତୁ theoretical triangulation refers to the use of various theoretical perspective in our research. ଆମେ research କଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କେତେକ theoretical perspective ରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। perspective ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏ ଲୋକ ଏହା କହିଥିଲେ, ଏ ଲୋକ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଦରକାର ପଡିବ ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ମେନସନ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ theoretical triangulation କହିବା, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? Yes sir. सर मेथडोलॉजिकल और थियोरेटिकल ट्रायंगुलेशन दीटा भितरे कोटा मोस्ट मोर रिलायबल? ମାନେ ସେଟା sociologist ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ methodological triangulation ୟୁଜ କରନ୍ତି sociologist, ହେଲା? theoretical triangulation is not ବେଶୀ ୟୁଜ କରାଯାଏନି, sociologist ମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା? ତେଣୁ methodological triangulation has a better advantage, okay? Yes sir. Jayashree, do you have any question? Jayashree Das. सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जोटा कहउतले सेटा टिके तार डेफिनेशन टा कहते। नहीं डेफिनेशन से नहीं, पर्सपेक्टिव माने गोटे दृष्टिकोण, हैना? फेमिनिस्ट दी प्रकार पर्सपेक्टिव इंटरव्यू रो पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव आ गोटे फेमिनिस्ट सेटा हाँ कहते। हाँ, पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव आउट ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सेटा रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू टा केमती हवा दरकार, रिगार्डिंग दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यू, हैना? इंटरव्यू केमती करा जीवो, सेटा केमती हमें करिवा, सेटा को दुई प्रकार व्यू देइचंती बा दृष्टिकोण अछि तार। गोटे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हो, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव गोटे सोशियोलॉजी रो बा फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजिस्ट जो माने अछंती सेने रिजेक्ट द assumption that between the strict separation between the researcher and the researcher. रिसर्च गोटे इंटरव्यू रे ए जन लोक थांती, दुई जन लोक, हां कि नहीं? जने हला रिसर्च ए रिसर्चर आ जने होची रेस्पोंडेंट, जने गवेषणा करिवो, जने पचारिवो जन, हैना? तेणु एई जो दी जन थिबे तांका भितर गोटा स्ट्रिक्ट सेपरेशन रहिबा दरकार बोलिकरी गोटे धारणा आगुर जा थिला, तमे ता साथ मिसिबनी, ता साथ डिस्टेंस मेंटेन करिवो, एउडा थिला। किंतु फेमिनिस्ट माने सेटा रिजेक्ट करछन, हैना? आज्ञा नहीं सेमती किसी स्ट्रिक्ट सेपरेशन दरकार नहीं, बरं तुम्हें गोटे फ्रेंडली एप्रोच करे गोटे इंटरव्यू में नहीं पाइबा, है ना? बिकॉज द वेरी पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज नॉट टू discuss, to collect information what is known to the respondent. Respondent को जଣା अछि सेटा केते दूर कहू, नॉट दैट सी जा जानिनी ताको पचारिबाटा गोटे इंटरव्यू। बुझ पाछो नै? आगे थिला इंटरव्यू रे केते कष्ट क्वेश्चन पचारिबा, ता द्वारा इंटरव्यू भारी कड़ा इंटरव्यू हला लोक कहନ୍ତି, किंतु वर्तमान तार पर्पस चेंज हेची। इंटरव्यू माने जणे पिला जहा जानिची, सपोज मु कहबी मु जयश्री तुमे सोशियोलॉजी रे कोटा विषय रे भलो कहि परिबो, आज धर सपोज आई एम कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर लेक्चर, है ना? तो हियर यू आर, तुमे सेतरे गोटे एप्लिकेंट अछो, तो आई कैन देयर बी प्रकार था मु कहबी मु जा पचार यू हैव टू, मु जहा पचार तुमे सेया कहबो, ये गोटे अप्रोच। आ गोटे अप्रोच नाही, आई गिव यू ऑप्शन,
Jayashree, so what in which subject you have mastery? କୋଉ subject କୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବ କୁହ ମୁଁ ତାରି ଉପରେ କହିପାରିବି ହେଲା so it is ଆଜ୍ଞା interview of purpose ହେଲା କଣ to know to collect the information what the research the respondent knows better ତେଣୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଢିଛି ତାର ମାଷ୍ଟରୀ ଅଛି ତାର ଉପରୁ ସେ କେତେ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ହଉଛି purpose of interview ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସେ ଯୋଉ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ରିସର୍ଚର ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଇ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେପାରେସନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବରଂ ରାଦର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେବା ଦରକାର ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ କି ସାର୍ ଯୋଉ ଆଉ ମାଲିନୋସ୍କି କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଜେନୋଲୋଜିର ତାର ଡେଫିନେସନ ଟା କହିଦେବେ ନାଇଁ ଜେନୋଲୋଜିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟା ଜେନୋଲୋଜିଟା ସର୍ଟରେ କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସପୋଜ ଆପଣ ତାର ତମ ଡେଫିନେସନ ଟା କହୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଟା ଆଉ ହଁ ଲେଖି ହଁ ପାରିଲିନି ସେଇଟା ଲେଖିନ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ ଅଛି ବହିରେ ଦେଖିବ ଶୁଣ ସେଟା ହଉଛି କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତୁମ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କଣ ତୁମ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଅଫ ଏଇଟା ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତେଣୁ ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିଟା ହେଲ୍ପ କରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ କିନସିପ ଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରେ ହଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରେ by knowing your genealogical status I know your attitude your life ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ତମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତମ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତମର ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଥିବେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସେ ଯେ ଗୋଟେ କନସାଇଣ୍ଟିୟସ ବିବେକୀ ଲୋକ ତେଣୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜେନୋଲୋଜିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିରାଇଭ୍ କରିପାରିବା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ସବୁ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ପରିବାର ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଇଁ କୋଉ ପରିବାରରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଓକେ ସେଇଟା ସେଇ ଜେନୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରୁ ଓକେ ଆଜ୍ଞା Sir, what is the difference between life history and oral history? ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଓରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କଣ ଜଣଙ୍କର କଣ ମାନେ ଏବାଉଟ ଦ ଲାଇଫ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଜ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଯାହାଟା ତାକୁ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆଉ ଓରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ମୌଖିକ ଭାବେ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ହେଲା ମୌଖିକ ଭାବେ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଓରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଫ ଦି ପାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ ହେଲା ମୁଁ କେତେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ତମକୁ ସବୁ କହିନି ଆ ଦେହରେ ଯୋଉଗୁଡା କାହିଁକିନା ଏତେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଚାପ୍ଟରକୁ କଭର କରିବା ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ ହେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ପଢ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିବ ତମେ କେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ଓକେ Again, sir. Again, sir. ଓକେ ଏନି ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ Sujipta Priyadarshini, do you have any question? Disha, do you have any question? Guru Yes, Prasad, sir. Disha, go on. Sir, some days back I was reading the Hindu newspaper and I found an article about the increasing disgraced migration in the Bonda tribes of Odisha. So, Increasing in the distress migration. distress migration among the Bonda Yes. tribes. Yes, sir. Due to Hmm. the lack of that communication and due to the lack of information and communication technology, the students aren't able to afford the online classes because they don't have the accessibility. And due to all these reasons, there is increasing the dropouts from the schools and children are forced to go to the labor scenario. So, sir, this type, if there any research is done on this field, then will it be an ethnographic research or survey research also can be done in this field? ମାନେ question ଟା କଣ ତମର? What is your question? So my question is that the topic which I said you that on that topic, if any research will be done, because it's about tribal people. So Hmm. if any research is done, will it go under the ethnographic research or Yes, other research can also be done?
नहीं ethnographic research can be done. ethnographic Yes. एटा basically जेतु डिटेल तांकर डिटेल लाइफस्टाइल ऊपर स्टडी करिवो तो एटा गोटे ethnographic स्टडी भी हेई परिवो हला भाई कोई किंतु ए जो ओनली देयर ड्रॉप आउट विषय तुम स्टडी करिवो दैट सेटा आगे गोटे ethnographic स्टडी होबो नाही हला आगे ओनली स्टडी द जदि ड्रॉप आउट गोटे आगे सर जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो लिखी थिला से टॉपिक टा माने पूरा तार हेडिंग टा ही से थिला तो सेटा ऊपर जदि हमें फोकस करले त सेटा एथनोग्राफिक रिसर्च हबोनी ethnographic तांकर जे डिस्ट्रेस माइग्रेशन हबो तांकर ओरिजिनल ये थारु ताले सेटा ethnographic हो किंतु तुम ड्रॉप आउट कथा कहउछ ना स्कूल ड्रॉप आउट अमंग समको एगुडा कहले दैट से पारे बुझ पड़ल ना किंतु जदि तांकर डिस्ट्रेस होउची माइग्रेशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस टू अदर दैट इज एन Yes. ethnographic स्टडी ओके सर डिस्ट्रेस रा रीजन देथिला ए प्रॉब्लम जोको एबे इंक्रीज हैला से टाइम रे लॉकडाउन टाइम नहीं से ये जो बंदा सी जो विभिन्न प्रकार स्टडी जे करूछन दे कने बंदा has a different lifestyle से माने यस प्रिफर तांकर निज लाइफस्टाइल को मेंटेन करिया पई तांकर गोटे माने ये थाए टू मेंटेन देयर ट्रेडिशन है ना से माने Yes. कम्युनिकेशन को बहुत कम बंडा रे बे जणे अल्प की पिला बोधे क्वालिफाइड हेले हैं बंडा तो अनदर यू नो बंडा टाइप ए यूनिक ट्रेडिशन तांकर ड्रेस तांकर जो स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंट्स ते मार करथिबो सब माने बे बंडा टाइप्स रा आउ गोटे अपोजिट टू आवर सोसाइटी तुम जानथिबो बंडा मानकर तांकर स्त्री लोक माने तांकर हस्बैंड इज लेस इन एज देन देयर वाइफ वाइफ आरो बंडा पुरुष माने कम बयस ए बंडा गर्ल प्रिफर ए स्मॉल एज बॉय टू मैरी हमर जस्ट अपोजिट टू आवर रीजन अछि ना केमति भले तांकर ट्रैक मतलब सर सेमति किसी स्पेसिफिक रीजन अछि ना एमति हां रीजन अछि जो हमर कोन रीजन अछि कोना हमर जो रीजन अछि जे हमर हस्बैंड बड़ हवा दरकार स्त्रीटा ताटू साना हवा दरकार को रीजन हमर कोन रीजन को हमें जो रीजन पाई हमर अछि उभय दीट प्रकार बेसिकली हमर एटा सोशल रीजन तार विभिन्न रीजन अछि बायोलॉजी सोशल अरेंजमेंट हमर हेछि पूर्वर से नहीं तार सोशल रीजन अछि बायोलॉजिकल रीजन अछि है ना तेणु सेमाने मध्ये से बायोलॉजिकल रीजन और सोशियोलॉजिकल रीजन अछि तांकर जस्टिफाई करिया पाई है ना तेणु सेमाने कहउचंदी जेने आमे भाबुछ आमे कोन आमे कम बयस रे जे गोटे स्त्री लोक मैरिज जे को मैरिज कले से आमे बुढ़ा लाडू से आम जत्र ना सोशल रीजन है ना सेमाने से जाउचंदी हैं सेमाने बंडा मे फीमेल सर मोर एडवांस सेमाने होउचंदी आमे जे छोट पिला को गोटे छोट पुरुष भाव से आम जत्र न बुढ़ा आम जत्र न बुढ़ी गई काइंड ऑफ सोशल कंसिडरेशन तर बायोलॉजिकल रीजन अदर अछि दैट कैन नॉट बी कोई करे है ना तो सेटा को कोई बने ओके रिसर्च टा को आडे जीवो सेटा पचारतले पेशेंट हां 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 डिस्ट्रेस ले ओरिजिनल होमलैंड रो डिस्ट्रेस होउची देन दैट इज दैट कॉमन सर आपण जो कहले जो रिलेबिलिटी थ्री टाइप्स रा फास्ट रिलेबिलिटी का स्पेलिंग रे सर कहले जो डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक रिलेबिलिटी विस्कोटिक क्यू से यू आई अच्छी बहे देखो क्यू आई एक्स हमको मिलनी हैं हमको मटेरियल हम के रिसीव करिनो ओके पाई नो अच्छा अच्छा आज्ञा सर सेटा कहूं हां क्यू यू आई एक्स ओ टी आई सी विस्कोटिक रिलायबिलिटी ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल अछि जे मिलिनी से फॉलो करी हबो यू कैन गो ମୋ ପାଖକୁ ଡବଲ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି MSO-002 डबल है ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆପକୁ ପଠେଇ ଦିଅ डबल और दीटा बुक्स अछि ना तारो हां तीनटा बुक्स ए जो ତିନିଟା ଛଅଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି तीनटा बुक्स अछि ओ MSO-2 ର तीनटा 1 2 3 बुक 1 बुक 2 बुक 3 ओके जेहेतु किसी material रे issues भी अच्छी so that can you share your screen while you are discussing the topic so that we can see and correlate it with the topic that you taught online classes. Guru, I can't understand. Repeat again. Sir, actually, I mean to say that can you share your screen while you teach us during the online classes so that we can correlate it, the topics? So, this can be done by the office. है ना? Okay. The office record it. है ना?
the classes that we are taking is recorded by the office. So if you contact office, they can give the recorded version of the classes through email or your WhatsApp. Okay. Sorry sir, I'm not asking about the recorded version. I am just sir more कहर कथा है suppose अपन आज जो topic survey methods ऊपर कहले, so that sir अपन screen share करी परिबे present presentation kind of things, so that आमी से जो PDF क्या होचा आमी relate करी परिबो जहाँ भी topics अपन पढ़ौचंती sir. Just suggestion sir. स्क्रीनशॉट करके पठेया पे नहीं नहीं sir, screen share करिया पे कहूचे sir. ओहो सर आपण आपनका स्क्रीन रे शेयर करि देले नोट्स टाइप रो रहि जबो जोटा कि स्क्रीनशॉट नै गले इट विल बी इजियर टू फॉलो. सेटा आमे भी देखि परिबो, समस्त देखि परिबो sir सेटा. अच्छा अच्छा ओके Just suggestion sir. ओके ओके ठीक है आई थिंक ओवर दैट है ना. Thank you. थैंक यू थैंक यू काली रो सर टॉपिक किछि कहै काली काली आसना काली ପାଇଁ आगे आसना काली हमें डिस्कस करबा ब्लॉक 8 that is data analysis and presentation of research finding. Data analysis and presentation of research finding. Okay. Okay sir. Okay. Thank you all. Have a good night and a good sleep. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir. ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅନଲାଇନ୍ ରହିଲେ WhatsApp ଗ୍ରୁପ କରିବାର ଥିଲା ହେଲା କି? ସୁଜିତ ପରି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ